Hello students, welcome to all Scholar classes. So today I will be taking the third part of the chapter 3 atoms and molecules. Okay. So today I will be discussing about molecules and ions, compounds, all this. Okay, we have already studied about atoms, that atoms is the smallest unit of matter. Okay. And these atoms, they combine to form molecules. Since atoms are very small, very tiny, we cannot study them if they are existing independently. Okay, so a molecule is a generally a group of two or more atoms. What you can say? Molecule is what? It's a group of two or more atoms. Two or more atoms form a molecule. And these atoms, they are of how they are bonded? They are chemically bonded. Okay? They are chemically bonded. So, together. They are chemically bonded together, that is tightly held together by an attractive force. So we can say that molecule, what is a molecule? Molecule is in general, okay, a group of two or more atoms, okay, two or more atoms that are chemically bound, together by attractive forces. Okay, attractive forces. So this is what called as molecule. So you can say that a molecule is defined as the smallest particle of an element or a compound. So atom was the smallest particle of matter, and molecule can be defined as the smallest particle of an element or compound. Element या compound का जो smallest particle है उसको हम क्या बोलेंगे? Molecule. And that is capable of an independent existence. बस atom independently exist नहीं कर सकता था, but molecules they have a capacity to exist independently. Okay, they exist independently and show all the properties in that particular substance. So atom of the same element or of different element can join together to form molecules. Okay, so atoms, either they can be of same element or they can be of different element. They join together to form what? To form molecules. So let's see what is the molecule of an element. Okay, so molecules of elements. Molecules of elements. So molecules of an element are constituted by the same type of atoms or molecules of many elements, such as there are examples like argon is there, that is Ar, helium is there, that is He. Okay, so many are there that are made up of only one atom of that element. Okay, only one atom is there, that is only helium is there,
the periodic, there is a definite chapter about metals and metals and non-metals. So especially the non-metals, what they do, they form a molecule of the atom of more than one atom. Example देखिए, ऑक्सीजन लीजिए, ऑक्सीजन इज अ non-metal. Okay, oxygen, it consists of two atoms, O2. O2 में क्या है, O का एक एटम और O का एक एटम, दो एटम O के बनाते हैं ऑक्सीजन O2. ओके, सो दिस टाइप ऑफ एटम जिसमें एक एटम है, इसको तो हम क्या कहेंगे, मोनोएटॉमिक. जिसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं एटम के, उसको हम क्या कहेंगे, डायएटॉमिक. ओके, इट इज नोन एज डायएटॉमिक मॉलिक्यूल O2. एंड समटाइम्स O exists, O plus O, three atoms of O, that is O3, ozone is there. Okay, so this ozone, that is what, it is a triatomic. Okay, it is a triatomic. Okay, so what is happening ki different types of atoms are participating. Somewhere single atom, that is monoatomic, double atom, diatomic, triatomic, and sometimes more than 3 atoms participate. We call them polyatomic. ओके, पॉलीएटॉमिक का एग्जांपल है फास्फोरस का 4p4, 4 फास्फोरस कंबाइन करते हैं, उसको आप टेट्राएटॉमिक भी कह सकते हो. वैसे हम पॉलीएटॉमिक ही है. S8 है, सल्फर के 8 एटम्स कंबाइन करते हैं. These are all are the examples of polyatomic. So what we see, monoatomic, diatomic, triatomic and polyatomic. So on this basis we can define atomicity. Okay, atomicity. So what is atomicity? The number of atoms, the number of atoms constituting a molecule. Okay, the number of atoms that is constituting a molecule, we call it as, it is known as atomicity. Number of atoms constituting a molecule. यहाँ पे आर्गन और हीलियम, वन एटम है आर्गन का, वन हीलियम का, जो कि एक मॉलिक्यूल बना रहा है. यहाँ पे दो एटम है ऑक्सीजन के, डायएटॉमिक, 3 एटम है ऑक्सीजन के, ट्राइएटॉमिक, 4 एटम है फास्फोरस के, तो पॉलीएटॉमिक. ओके, और मोर देन 3 जितने भी रहेंगे, ग्रेटर देन 3, 4 और मोर देन 4 आल्सो यू कैन से, और ग्रेटर देन 3, उनको हम पॉलीएटॉमिक कहेंगे. तो ये तो बात हुई एटॉमिसिटी की. ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी you can see that this molecules can be divided as monoatomic, diatomic, triatomic and polyatomic. So what happened, metals and some other elements such as carbon do not have simple structure but consist of a very large and infinite number of atoms bounded together. Okay, बहुत सारे metals हैं, और for example कार्बन भी है. इन लोगों का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल नहीं होता और इनके पास बहुत सारे एटम्स होते हैं. So let's see the example of some of the atomicity. कुछ मॉलिक्यूल्स के एटॉमिसिटी के एग्जांपल्स देखेंगे. ओके, सो लेट्स सी नॉन मेटल्स का देखते हैं. ओके, नॉन मेटल्स में
that is H2. Okay, nitrogen is there. Nitrogen. It is also N2 is there. Chlorine is there. Cl2. ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं एलिमेंट्स हैं जिनकी कैसी एटॉमिसिटी है, दे आर डायटोमिक. You can see two atoms are involved in each case. Okay, then comes phosphorus P4. It is a tetraatomic. Okay, tetraatomic. Then sulfur, that is a S8, we say it as a polyatomic. So this was the examples of some of the atomicity of some non-metals. Okay, you can see that here. Now we will discuss about the molecules of compounds. Okay, so now we will study about molecules of compounds. So if you go in the previous chapter video, you can see there I have explained about compounds in detail. Okay, so what happens ki atoms of different element, okay, atoms of different elements, okay, they join together और ये ज्वाइनिंग कैसे होती है ना, डेफिनेट प्रोपोर्शन. दे ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन. दे ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनेट proportions to form what they form, molecule of compound, molecules of compounds. Okay, so atoms of different elements join together in definite proportion to form molecules of compound. जो molecules of compound है वो कैसे बनते हैं, जब atoms एक definite proportion में join करेंगे. Okay, I will be telling you the examples of some of these atoms. Okay, suppose let's see. Let's take the example. Okay, so first we will take a compound. Okay, suppose water. Water is a compound whose formula is H2O. Two molecules, two atoms of H and one atom of oxygen. So the combining elements are, what are the combining elements here? You can see. Okay, what is the combining element? Okay, so here the combining element are hydrogen and oxygen. Okay, so these elements they will combine in a definite ratio. Okay, so what will be the ratio in which they are going to combine? The ratio by mass. We will take ratio by mass. So that ratio will be 1:8. Okay, it is always going to be hydrogen and oxygen 1:8. No matter what is the source from which it is obtained, but it will be always the ratio of mass will be 1:8. Similarly, let's take the example of ammonia. Okay, ammonia is a compound whose formula is NH3. One molecule of nitrogen and 3 molecules of hydrogen. So the combining elements are nitrogen and hydrogen. Their ratio by mass is 14:3. It will always remain
elements that are combining are carbon and oxygen. Okay, so there the ratio is going to be 3:8. It is a definite proportion. This ratio will be fixed from where the carbon is obtained. Sometimes the carbon is obtained how? C plus O gives CO2, or sometimes CaCO3 gives CaO plus CO2. तो यहाँ भी CO2 मिला, यहाँ भी CO2 मिला, बट जो सोर्स था वो डिफरेंट था. यहाँ पे C plus O कंबाइन करके CO2 दिया, यहाँ पे क्या है CaO3 ने CaO निकाला और CO2 मिला. दोनों जगह बना तो CO2, बट सोर्स डिफरेंट था, लेकिन जो रेशियो बाय मास है वो हमेशा फिक्स होगा. दैट विल बी 3:8, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 3:8. ओके, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. इट मींस कि क्या सोर्स है, कहाँ से ऑब्टेन हुआ कोई पर्टिकुलर कंपाउंड, वी डोंट बॉदर देम, और वी ओनली नीड दैट द रेशियो इज गोइंग टू बी फिक्स्ड. कहीं पे भी ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन का फॉर्मेशन अमोनिया का होगा, वाटर का होगा, रेशियो यही बनेगा. ओके, सो रेशियो डिपेंड्स अपॉन द कंपाउंड. It is in a fixed, definite proportion. It is not going to change. So this was about molecules. Now what happens? These atoms, they just form a layers. They form to form molecule and also they form ions. Atoms क्या है? वो molecules भी बनाते हैं और ions भी बनाते हैं. तो हमने molecules के बारे में तो पढ़ लिया. Let's study about ions also. What is an ion? Okay. So let's see what is an ion. So what happens? कि compounds are composed of metals and non-metals, and these metals and non-metals they have a specific charge. तो वो जो charge है metals और non-metals में, the charge species of metals and non-metals are called as ions. ठीक है, metals और non-metals के पास charges होते हैं, charge species है metals और non-metals, उन charge species को हम ions बोलेंगे. अब ions का क्या है? Ions में consist a single charge of atom or a group of atoms. Okay, that they have a net charge on them. एक simple charge भी हो सकता है, 2 plus भी हो सकता है. Okay, so they can have a single charge atom or group of atoms that have a net charge on them. Okay, so an ion it is not necessary it is always a positive charge. It can be a negative charge also. So ion can be positively charged. Ions can be positively charged or they can be negatively charged. So if an ion is a negatively charged, it's called anion. And if an ion is a positively charged, it's called cation. Okay? अगर positively charged है तो हम क्या बोलेंगे? cation. और अगर negatively charged है तो we say it anion. अच्छा, most of the students say कि they always forget what is a cation and what is a anion. They could not remember it. ठीक है, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है रिमेंबर करने में. तो एक सिंपल सा फंडा मैं बताती हूँ, you will never forget remembering it. cation is a positive charge. क्या मिला आपको? एक प्लस साइन है, ठीक है, पॉजिटिव है. cation में T आता है. T कैसे लिखा है? प्लस की तरह लिखा है. बस इसी तरह याद कर लो. प्लस है तो cation है, माइनस है तो anion. ओके, वेरी सिंपल. माइनस इज नेगेटिव n, डबल टाइम n इज देयर, और प्लस है तो cation. cation में T आता है. T कैसे रिप्रेजेंट
किया प्लस की तरह। ओके, अब एग्जांपल लेते हैं NaCl। ओके, NaCl में कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्टिकल्स दो हैं, एक Na है और एक जो है कि सोडियम आयन है, सॉरी Na है और दूसरा जो है कि आपका क्लोरीन है। अब क्या होगा कि इनमें चार्ज कैसे आएगा, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसको देखते हैं 2 8 10 और 1, लास्ट में इसके लास्ट सेल में वैलेंस सेल में 1 एटम बचा, इसका 17 है तो 2 8 7 17 हो गया। अब क्या है कि अगर इफ इट इज गोइंग टू डोनेट इट्स 1 इलेक्ट्रॉन टू समबडी, तो इसके 2 वैलेंस सेल जो होंगे वो कंप्लीटली फिल्ड होंगे एंड इट वांट्स 1 इलेक्ट्रॉन सो दैट इट्स ऑल द 3 सेल्स आर गोइंग टू बी कंप्लीटली फिल्ड। अब Na अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको क्लोरीन को, इट इज गोइंग टू डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन। नाउ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, इसने अपना एक नेगेटिव चार्ज इसको दे दिया, तो पहले तो इसका 2 और 8 हो गया, 1 निकल गया। अब चूंकि 1 निकला तो क्या होगा, एक नेगेटिव चार्ज गया, इलेक्ट्रॉन गया, नेगेटिव गया, तो क्या हो गया, पॉजिटिव ज्यादा हो गया। ठीक है, तो Na+ हो गया, क्या है, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, सोडियम के पास 10, लेकिन प्रोटॉन स्टिल इट हैज 11 और प्रोटॉन का क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो इसका क्या चार्ज हो गया, Na पॉजिटिव। इसका क्या हुआ, इसके प्रोटॉन अभी भी 17 है लेकिन इलेक्ट्रॉन 18 हो गया, एक नेगेटिव चार्ज ऐड हो गया। ओके, सो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, Cl नेगेटिव। ओके, तो Na पॉजिटिव हो गया, तो Na क्या हो गया, कैटायन, Cl नेगेटिव हो गया तो इट विल बी anion। So a group of atoms carrying a charge is known as polyatomic ion. Okay? पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है NaCl में, ठीक है। सो ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग चार्ज आर नोन एज पॉलीएटॉमिक आयन। ओके, लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ सम आयनिक कंपाउंड। एक एग्जांपल तो NaCl का लिया हमने, कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं, लेट्स सी। आई होप इट मस्ट बी क्लियर टू यू कि हाउ Na हैज बीन पॉजिटिवली चार्ज और Cl के पास नेगेटिव चार्ज क्यों आया। जो इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज है, नेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो नेगेटिव चार्ज ऐड करेगा और जो दे देगा, जो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, नेगेटिविटी हटा रहा है अपने अंदर से, नेगेटिव निकाल रहा है, तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप अपने कॉमन लाइफ में देखिए, इफ यू रिमूव नेगेटिविटी इन योर लाइफ यू विल गेट पॉजिटिविटी। इलेक्ट्रॉन हटाया, नेगेटिविटी को हटाया, पॉजिटिव चार्ज मिला, इलेक्ट्रॉन लिया, नेगेटिव चार्ज मिला, नेगेटिविटी को लिया। ओके, सो लेट्स सी सम ऑफ द आयनिक कंपाउंड। ओके, आयनिक कंपाउंड्स कौन से हैं, कैल्शियम ऑक्साइड है। ओके, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर, कैल्शियम है और ऑक्सीजन है। ओके, Ca है और O, ठीक है। इनका रेशियो बाय मास देखते हैं, एक स्पेसिफिक रेशियो होगा इनका भी, तो रेशियो बाय मास कितना है इनका, 5:2, that will be fixed like that। let's see of magnesium। ओके, मैग्नीशियम सल्फाइड, यहाँ पे कौन कौन से हैं, एक तो मैग्नीशियम है और दूसरा
सल्फर, ठीक है, एलिमेंट्स जो है यहाँ पे, एलिमेंट्स लिख लीजिए यहाँ पे। तो एक मैग्नीशियम है, दूसरा सल्फर है। तो मैग्नीशियम और सल्फर का क्या रेशियो बाय मास है? 3:4। ओके, सिमिलरली सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड का में क्या कौन कौन से हैं? एक तो सोडियम है, Na है और एक क्लोरीन है, दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इनका रेशियो क्या है? 23:35.5। क्लोरीन का जो मास होता है वो 35.5 होता है, सोडियम का 23, तो 23:35.5। So all that matter, all that we have explained is just to say that these molecules, these ions, their the ratio of mass is definite. एक फिक्स रेशियो में ये मॉलिक्यूल्स भी एग्जिस्ट करेंगे और ये आयंस भी एग्जिस्ट करेंगे। ओके, इनका एक फिक्स रेशियो होगा, उसको we can't change it. ओके, so this was all for today. Here we finish our molecules and ions. That is the part 3 of the chapter atoms and molecules. In my next video, that is the part 4, which will be uploaded, you will see that we will study about writing a chemical formulas, how chemical formulas are being written. Okay, so this was all for today. Thank you so much. Thank you for watching my video. And if you have liked it, please give a like button. And if you have not subscribed our channel yet, please do subscribe it. We upload daily one video so that it will be easy for you in learning. Just go and subscribe it. Thank you so much.